अच्छा ठीक है, भेज रहे। आ गया। सब है उनके हाथ में, हम लोग भेजते हैं लिंक, टेंशन मत लो। लिंक चालू हो गया। हाँ, लाइव भैया जी इसकी लिंक स्माइल भेजते हैज हैं उनको, लेट मी इसकी लिंक से। कॉल सोनल। मैं ऊपर बैठी हूँ, कैंपस कॉलेज और आई थिंक आई मोहित। Hi Sonal, how are you? Hi, how are you? Good, good, good. First time in my life I'm ever doing this thing. I've How are never you gone feeling? live on Instagram. I just get to know last week that hey, we are doing this, and I like, who's the host? It's like Gautam Madhavan. मैंने क्या बात कर रहे हो? So it's a privilege, Sonal. I thank you for joining in. I think I will start. प्रफुल्ल भाई को भी ले लेते हैं. प्रफुल्ल भाई. It's crazy, you know. My first live, and I'm doing with two best people of social media. Hi, प्रफुल्ल भाई That's कैसे good. हो? You should राम do राम. that. hi, both Hi, of you. how are How are you? you? I'm good. How are you? प्रफुल्ल Good, भाई good. टी शर्ट उल्टी पहनी है या सीधी है? सीधी सीधी है. अरे नहीं, झूठ कह रहे हो आप. सच बोलो ना. नहीं सच में सच सीधी पहनूंगा यार. सीधी है. सोनल आपको सीधी लग रही है उल्टी लग रही है? I think it's looking fine. It's mirrored, right? Oh, Yes, it's measured. So but was Instagram needs to update that science themselves or maths? कि भाई वो सीधा दिखे. लाइक आईफोन में आजकल होता है ना, उल्टा फोटो पहले आता था, अब वो सीधा हो जाता है. हम तो सैमसंग एस क्या कहते हैं 12,000 वाले फोन यूज कर रहे हैं. But anyways, Praful bhai, I was just telling Sonal that it's my privilege to do my first live ever with two big social media stars and just understand about you guys more. I know about Sonal very well. We go a long way. Praful bhai, I don't know if you remember, we met in Dubai at 1 billion summit. है ना? Yes, next Sabbath. We Yeah. Yes. And we have many common friends between us. One of them is Sankalp. Sakal, yes. बहुत बहुत अच्छा लगा. But Correct. first of all, so I've been given a small script to read forcefully. अभी तक मैंने बिना कुछ इसके बोला. So just for the conversation's sake and how we start is everyone, welcome to See You at Live. This is our first See You at Live. What we did at Creators United 15th and 16th of January. This is a follow up how we make Creators United a bigger thing for the creators economy. And this Creators United is basically why we started is only for to make the creator economy even bigger. From an agency perspective, from a brand perspective, from the creator perspective, the entire ecosystem comes together to celebrate content. That is why Creators United was born. And ये हमने 2019 में सोचा था और फाइनली 2023 में हमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. And there is no platform where it talks about influencers or content creators, what we do, what we don't do. So this is one platform where we want to talk about you, talk about how you think, talk about how you believe, what you believe in, where you go, who you are dating, who you are not dating, all those things. But we'll come to that later. So let me quickly introduce. We got like 1,500 people watching. So I will quickly introduce myself. My name is Gautam Madhavan, and I am the founder and CEO of Mad Influence, and I work with Creators United as well. So coming to Sonal, Sonal is I said it and I'm saying it again that Sonal is me and Sonal go way long, and she's one amazing passionate dancer and then became a content creator. And she does everything with grace, and she's that person that अगर हमने बोला कि यार कोई Sonal is doing our campaign, we know चलो we have a case study to show to other people. So that is Sonal to me, Sonal to us.
Praful Bhai, I think he has taken over the internet by storm uh, in multiple ways. And with his innovative ideas, I think now you have BBA chaiwalas, now you have BCom chaiwalas, you have so many copy chaiwalas or coffee walas. But the वो होता है ना बिस्लरी एक ही होता है ना the first mover advantage is always the king. So Praful Bhai is that king of this industry, and kudos to what you've built in such a short time. Not short time, but such a in such grace manner, in such a proper manner. So I will start with the basic topic of this session. So we all are content creators. I think I am a content creator too now after this session. But my biggest thing is why we are here is to celebrate Social Media Day. Today is Social Media Day, and we are here to celebrate social media. And I see a lot of verified people commenting. अब तो मुझे यही नहीं पता कौन असली verified है कौन नकली verified है. But anyways, kudos to all the people who are verified now. 799 only, sorry 699 only. तो पहला हमारा टॉपिक आज का टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो है ट्रोल के ऊपर कि हम सारे जो ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया तो हम नहीं मतलब हम शायद किसी को करते हैं ट्रोल शायद किसी का ट्रोल हम पे आता है या हम ट्रोल इज नॉट ओनली ऑनलाइन वर्ड इट इज ऑफलाइन वर्ड जो हम बस बोलते हैं भाई इसकी ले रहे हैं इसकी बेइज्जती कर रहे हैं उसकी बेइज्जती कर रहे हैं that is troll right offline zindagi mein you get bullied or you bully somebody else so this is online trolling is online bullying I want to start with my first thought that I'm asking to both of you ऐसा नहीं है कि किसी से पूछ रहा हूँ have you personally experienced or witnessed trolling as a content creator and if yes how did it affect your mental health or the mental health of somebody you know if not you Sonal, you should start, I think. Like every creator, see, honestly, I have not been trolled. I feel that, because we've been teaching since so many years, our audience is 85% female, and they have been extremely kind, and they have been really nice over the years. And, we have like a vast demographic of kids and, teenagers, and then, our age group. And everyone, honestly, has been really encouraging. If we have ever put out something in terms of art or, creating choreography, which it has not gone down with well with people, they do give their feedback. And, we are open to criticism because not every content is going to be perfect. Do you feel bad? Of course, you do feel bad. Because it is you are putting out your hard work out there. But I take it as constructive criticism, and I try to see what we can do well next time. But luckily, till now, we've not been heavily trolled as such. It's just constructive criticism, and so yeah, that way. Nice. Praful bhai? So I have been very much like मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों का so troll बोल के रोस्ट बोल के I have been through this and I do occasionally I get this प्यार from people so ऐसे जैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहा गया तो मेरे को डबल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लोगों का मिलता है 4 गुना 5 गुना 10 गुना मिलता है और हर चीज को मैंने बहुत झेला है पिछले 2-3 सालों से आई बीन थ्रू दिस एंड इट्स नॉट बिकॉज कि वो मुझे गाली दे रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज इट्स मेजरली फॉर 80-85% इट्स ऑल अबाउट व्यूअरशिप आई हैव सीन बिकॉज मैंने बहुत सारों को लोगों को देखा है कि वो यहाँ पे मुझे गाली दे रहे हैं और साइड में मुझसे सेल्फी ले रहे हैं आप समझ रहे हो या यहाँ पे कुछ गलत बोल रहे हैं और फिर डीएम में बोल रहे हैं प्रफुल भाई लेट्स मीट एंड डू दिस एंड दैट सो इट हैपेंस हाँ मेंटली मैं बहुत हैरास होता था अभी भी होता हूँ लाइक ये थोड़ा एक अलग दौर रहता है कि आपको एक तरफ से बहुत प्यार मिलता है आपको लोग इज्जत देते हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम की वजह से आपकी फैमिली आपको बहुत अप्रिशिएट करती है कि आपको वहां मिल रहा है वहां जा रहे हो सम्मान मिल रहा है बट वो आटे में नमक के समान एवरी टाइम यू मीट पीपल जो आपको अच्छा नहीं होगा सो लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट कि आदमी को खुशी चाहिए ना आपके जीवन में क्या बोलते हैं एक पर्पस ऑफ लाइफ इज व्हाट की बी हैप्पी फाइंड हैप्पीनेस ये होता है ना तो कुछ लोगों को मेहनत करके कुछ बिल्ड करके खुशी होती है
कुछ लोगों को आप जैसे इतना अच्छा कंपनी चला रहे हो, क्रिएटर्स वर्ल्ड डेवलप कर रहे हो, तो उसमें खुशी है. सोनल इज वर्किंग वेरी हार्ड टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ फीमेल, और भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा के, सिखा के, समझा के. कुछ लोगों को गाली दे के खुशी होती है. So if you are doing finding happiness, so if you see the purpose of someone's happiness, it makes कि वो कौन है और कैसे होंगे. कि अभी सोनल को मैं गाली दूं and I'm happy, so यहाँ पे मेरे को कोई काम नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करना है, I'm happy. So इसमें आप अपना कुछ फील्ड नहीं बनाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे. So it happens first. Second, it's very easy to blame. It is very easy to गाली देना. It's very easy. जहां पे टफनेस आ जाएगी, जहां पे लगेगा कि एक फॉर्म भरना है आपको 10 पेज का और फिर किसी को गाली देना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 99% ट्रोलर खत्म हो जाएंगे. कि आपको एक फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म भरना है, या मानो एक लिंक करना है आपका आधार कार्ड कि आप ट्रोल कर सकते हो, नाउ यू आर एलिजिबल, तो उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ 95% ट्रोलर्स एंड रोस्टर्स विल गो अवे. सो आई फाइंड इट अ गुड फॉर कम्युनिटी. बहुत सारी बार क्या होता है कि कुछ ऐसे आइकॉन्स हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं, शायद वो गलत होंगे या उनका पर्पस गलत होगा, बट उनकी नियत विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है. क्योंकि कोई भी आदमी मम्मी के पेट से सीख के सारी चीजें बेस्ट नहीं आता है बॉस. मैंने ये सीखा है. You grow with the passage of time, you learn things, you meet people, you change your perspective with the circumstances you face, the environment you live in. Then you make your life and you take actions and decisions, and that's how you grow. तो मुझे लगता है everything is good if you want to grow. मतलब I agree, and I also love that point where आप बोलते हो कि यार क्या कहते हैं, एक फैन जो गाली देता है वही आके फोटो खिंचवाता है. बहुत बार हुआ है, 90%. My thought on that is, I think they probably give you, आपको बोलते हैं यार बहुत अच्छे हो, तो शायद ना आप रिएक्ट नहीं करते. Attention. अगर आप बोलोगे attention seek करने के लिए, I have a lot of friends who get trolled, and they only tell me कि यार गौतम हमारे, and this is females I'm talking, they write so bullshit about that person, and जब वो इतना भर देते हैं, एक रिप्लाई करते हैं तो बोलते हैं सॉरी दीदी, सॉरी मेरे को बस आपका रिप्लाई चाहिए था, मेरा दिन बन गया, आई एम सो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था. सो आई मीन दैट इज डेफिनेटली इट. एंड जो आप लोगों ने अभी जस्ट बोला है, आई विश कि आपके फैन पेजेस के वो, जैसे आपने वो देखे जो मोटिवेशनल टॉक्स बनते हैं जिसमें ट्रांजिशंस आते हैं, धड़ 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 धड़, एंड देन वो आता है. आई थिंक दैट्स अ गुड सेशन. So on that note, Sonal or Praful bhai, tell me what according to you qualifies as a troll? इसकी क्वालिफिकेशन तो होगी ना यार. आप जाते हो यूएस जाते हो, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, आप मिनिमम भाई ये ट्रोल होता है, इसलिए ट्रोल वोल नहीं है ना. तो आपके इसमें ट्रोल क्या है? What is according to you? I don't know, if they're just commenting rubbish for no reason and being extremely harsh, and it's not valid, and they're just trying to bring you down, and just to create controversy and just to be seen, I guess that's a troll. According to me, that is troll. There is no actual constructive criticism. It's just that, you hate a person just to hate, because you just feel like hating on the person. So I think that for me is a troller. And for me, बेकार है ये, क्या बेकार वीडियो? Is that a troll or is that a constructive criticism? It depends, right? It depends on what you write. Like basically, if someone is telling you that I didn't like your choreography this time, that's like, I get it. That's your perspective. But if someone is like, I hate you, I hate what you do, you are like this, if they write stuff which is totally not valid to your work, and what you put out, then I feel that they're just hating on you just because they have no other work at that point of time, and they're just sitting behind a device, and then for them it's just easy to hate on you. And also I think some people, some people just want to get your attention. So I feel then they write rubbish. And as soon as you respond to them, like, how could you say something like that for no reason? Then they're like, oh, so sorry. I thought you would never reply. I thought you would never see this. Means if they think that you would never see the text or DM, then you write whatever you want. I feel that's inappropriate. But it's honestly the internet, so it's a free space for everyone to just vent out their emotions, negative or positive.
प्रफुल्ल भाई आपका क्या कहना है? तो इंटरनेट के पिछले 3-4 साल का इवोल्यूशन अगर आप देखो, so people have bored up with everything. If you see fashion influencer, if you see motivation, if you see inspiration, if you see any beautiful girl or a man or a bodybuilder man, or you say a film star, or you say anyone, yeah, there are 100 topics plus जिसमें लोग वीडियोस बनाते हैं. अब पिछले 5 सालों से वो दिन भर में 5-5, 6-6 घंटे ऑडियंस आपका वो ले रही है, क्या बोलते हैं, ऑडियंस आपका कंज्यूम कर रही है. नाउ दे एवरीथिंग, दे नो कि जिंदगी में काम करना है, मोटिवेशन पाना है, फैशन कैसी होती है, दे नो कि हेयर को कैसे ठीक करे, दे नो कि स्किन को ठीक कैसे करे, दे नो कि बॉडी कैसे बनाए. नाउ दे ऑल नो एवरीथिंग. अब नया कंटेंट बचा नहीं है तो दे गोट बोर्ड विद एवरीथिंग दे गोट बोर्ड विद. सो लाइक सी इफ XYZ इज मेकिंग अ कंटेंट ऑन फिटनेस, हाँ मुझे पता है 25 पुशअप करनी है, बट मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उसका कोई लेने देना नहीं. बट नाउ आई एम बोर्ड विद योर कंटेंट. इधर यू चेंज योर कंटेंट और आई स्टार्ट हिटिंग यू फर्स्ट. सेकंड, हमारा कॉग्निटिव स्किल सोचने का खत्म हो गया है. इफ यू यूज सो मच सोशल मीडिया, you are a product now for social media. Instagram, they use you for as a customer, they use you as an audience, because वो व्यूअरशिप बिकती है. क्रिएटर इकोनॉमी भी आप जानते हो. तो उसमें नया पाने के लिए क्रिएटर्स भी जद्दोजहद कर रहा है, ऑडियंस भी जद्दोजहद कर रही है, क्रिएटर भी फंसता जा रहा है कि अब मैं नया क्या करूं, क्योंकि गाली हर किसी को पड़ रही है. आई एम सीइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ऑब्जर्विंग इट. मुझे कोई ऐसा क्रिएटर नहीं मिला लाइक जो मुझे बोल रहा है उसको गाली नहीं मिली. तो इफ एवरीबडी इज रॉन्ग देन हु इज राइट? इफ एवरीबडी इज गेटिंग ट्रोल देन हु इज रॉन्ग, मतलब हु इज राइट? चलो इस भड़ास पे आपसे स्पेसिफिक भाई, मुझे आप इस भड़ास पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. डू यू गेट द, क्या कहते हैं, अर्ज और जो गुस्सा या कुछ बोलते हैं, टू और क्रेव टू रिप्लाई टू दीज ट्रोल्स, कि भाई जब ये आते हैं, है ना, कितने सारे आते हैं, आपको उस टाइम पे कैसा फील होता है और उसको आप रिएक्ट कैसे करते हो? यार आप देख, पहले क्या हुआ था भाई, लक्ष्य और इन्होंने, हमारे भागेश भाई ने बढ़िया ट्रोल किया मुझे, बहुत भयंकर तरीके से. 8-9 महीने पहली बात है. मुझे नहीं पता वो मेरा कौन सा वीडियो 2015-16 का लिया है, पता नहीं कहाँ से कुछ फिटफाट किया. दे रिसर्च अ लॉट, दे स्पेंड एंड देयर होल टीम रिसर्च में बहुत टाइम किया. तो मैंने उसको थैंक यू बोला कि साला मैंने ये ऐसा भी बोल दिया था. तो आई थैंक टू देम, इट्स अ गुड वीडियो, इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वीडियो, एंड इतना ओपनली हमें बोलना नहीं चाहिए. और तो मैंने होता था कि रिप्लाई मैंने उनको प्यार से दिया, पर अब इतना नंबर बढ़ गया है क्योंकि अभी कीवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है MBA चाय वाला का. इफ यू मेक अ वीडियो ऑन एनी XYZ टॉपिक, you get 1000 video views or 2000 views. If someone trolls MBA चाय वाला, the video's virality goes to 10 lakh or 5 lakh. तो आई स्टॉप्ड इवन कमेंटिंग, आई स्टॉप्ड एनी रिएक्शन कि भाई मैं और रिएक्ट करूंगा ना इसको और इग्नाइट मिलेगा और ये ऊपर और लेके जाएगा इसको. तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि लेट्स एंड दिस राइट हियर. नाइस. मतलब Sonal doesn't get trolled, she gets positive comments. So I think I'm not saying I don't get hate, but I'm not a big big reactor. I just ignore, because out of like 100 comments you have 95 like decent, and then 5 people have spoken out. Let's switch the question, right? Let's switch the situation. I don't know about you, but I'm not a creator. I'm more of a fan or a viewer, right? So अब मेरे को कोई वीडियो बहुत irrelevant लगती है ना, मतलब I feel like writing this बड़ा मैसेज. Oh, you do feel लिखने like का बड़ा मन करता है कि भाई क्या कर रहा है ना, स्पेशली इफ यू नो देम और इवन इफ यू डोंट नो देम, राइट, इट डजंट मैटर. जैसे अभी पुनीत सुपरस्टार जैसे वीडियोस बनाते हैं ना, मेरे को बहुत मन करता है उनकी वीडियोस पे जाके कुछ लिखने का, बट फिर मुझे लगता है अगर मैंने लिख दिया ना, देन इट विल बैकफायर मी. एंड विद दैट क्या कहते हैं, फियर कह लो या फिर वो कह लो कि यार इट इज नॉट नाइस, यू शुड नॉट बी आउट देयर जस्ट लाइक अदर्स. I don't comment on anybody unless it is my friends or say it's Sonal's video or somebody else's that I know personally. I'll only write good. मतलब bad लिखने का मन करता है but नहीं करता था. So do you feel that for others? that if I No, should write something bad on other people's profile. Not bad. Like as in you will not write like others, right? I'm bad नहीं बोल सकता, but say something that is not right. Say the person is saying something which is against the ethics, or the person is making something which is not relevant, or something which is just bullshit content, right? You feel like कि भाई क्या कर रहा है, कुछ बोलने का मन करता है.
I genuinely am not that person who goes and, comments rubbish on other people's profiles. I'm not that person. Like if someone who I know and if something is wrong with their work, I'm a person who will maybe like call them up or message them saying that, this could have been better. It didn't work for me. This could have been better. But I'm not going to like slander them on social media. Neither will I go and write one para about how this could have been better, why did you do this and all that. I don't go and write. Like I'm a person who just ignores. See, I'm like, you do you as long as you are happy. you know if you are happy doing what you're doing, great. Because see, in the end, it is all anyone's content is what they want, how they want to express themselves. So I am not anyone to go and tell them if they're right or wrong, or if I don't agree with it, I just ignore it. I can just scroll past it, right? Like just swipe. I'm not going to just engage with it and then have a argument, waste their time and waste my time, because I'm sure they don't care in the end. How do we build? हमने problems बात करी है. Let's also talk about solutions, right? So I'm sure there are a lot of creators also who are watching this live, right? And probably they're the start of their career. And when we talk about, we get a lot of hate. How do we address them, or how do we solve them? Because we can't go to each and everybody's house and say कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, हम justifications नहीं दे सकते. But that's not a solution. Justification is not a solution. It's just being another way of getting trolled again. So what do you think is the solution for this? आप लोगों को क्या लगता है कि जो लोग ट्रोल करते हैं उनसे कैसे उनको समझाया जाए, या फिर बस ऐसे इग्नोर कर दो? इग्नोरेंस इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आप अपनी मेहनत और बढ़ा दो. आप जो भी काम कर रहे हो उसको और अच्छे तरीके से करो, ग्रो करो. 1-2 साल तक आप उनको जवाब मत दो, तो अपने आप ना जवाब देना भी बहुत बड़ा जवाब होता है कभी कभी. और आप अगर आपकी नीयत साफ है, इफ यू आर राइट एंड इफ यू आर रियली डूइंग वर्क फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर कंपनी और फॉर समथिंग, तो उसको यू कीप ऑन ग्रोइंग, यू कीप ऑन हसलिंग, यू कीप ऑन. सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज. मेरे टीचर बोलते थे, मैं जब 10th में पढ़ता था, सफलता सबसे अच्छा बदला है. तो मैं बोलता हूँ, आप अपनी सफलता पे ऊपर एंड सक्सेस के ऊपर या ग्रो के ऊपर काम करोगे तो अपने आप में एक वो अच्छे से लेसन उनको मिल जाएगा. एंड इवन बहुत सारी बार मैंने देखा है, जो बहुत सारे लोग जैसे मेरे को गाली देते थे या मेरे को जो भी देते थे, व्हेन दे मीट, बोले यार प्रफुल्ल भाई हम गलत समझते थे आपके बारे में. सो ये बहुत बार हुआ है. तो एक शायरी भी है ना कि इतना भी किसी को वो मत कर दो, बोले इतना भी गलत मत बता दो कि कभी उससे नजर ना मिला सकूं. सो इट हैपेंस कि So you need to ignore, and with the passage of time people understand कि यार ये बंदा सही है या बंदी सही है, क्यों मैं गलत समझ रहा था. और ओपिनियन पीपल लोगों के चेंज होते ही है, मैंने नोटिस किया है कि वो जैसे आज आपको गाली दे रहे तो शायद आपको बोले यार मैं कुछ और सोच रहा था, आप तो ऐसे निकले, या मैं अच्छा सोच रहा था, आप तो बुरे निकले. तो इट हैपेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड द मोर यू ग्रो, आपको प्यार भी बढ़ता जाएगा और इज्जत भी मिलेगी, गाली भी मिलेगी. पर मैंने एक चीज नोटिस किया है कि आप जहाँ पे ट्रोल रोस्टर को देखते हो, उससे ज्यादा कई लोग हैं जो प्यार करते हैं पर वो खुले दिल से बोलते नहीं है. कि मेरे को जैसे सोनल का कुछ अच्छा वीडियो लगा तो मैं कोई बहुत बड़ी वीडियो कमेंट नहीं करूंगा कि भाई बहुत अच्छा है ये एंड ऑल. आई विल बी इन फॉलोइंग इट हर, उसको डीएम कर दूंगा कभी हुआ, या कभी मिलेगा या मिलेगी तो आई विल अप्रिशिएट भाई कि भाई अच्छा काम कर रहे हो. Nice. Sonal, tell me, this is very specific probably for you, because you create a lot of dance content, है ना? आपका जो डांस का कंटेंट आप बनाते हो, आपका प्रोडक्शन क्वालिटी मैंने देखा है बहुत हाई लेवल होता है. ठीक है, इट इज वो ऐसा नहीं होता कि इट्स क्या कहते हैं प्रफुल्ल भाई, शी टेक्स 8 hours टू क्रिएट वन रील. ओके, एक रील का टाइम लगता है 8 घंटे. जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे अरे क्या है बन गया, मैंने देखा है यार. सो सोनल, डू यू थिंक इट इज वन ऑफ दोज रीजंस कि आपका क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन or say the quality of the content that you create is a little extraordinary than many others? क्या उसके वजह से do you think you get very less trolls, or where you don't speak or you don't, it is because music का कोई language नहीं होता तो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं? Do you think that is one of the reasons of you being like you creating high quality content? Is that one of the major reasons without speaking gets you less troll and more love? Yeah, I don't think it's only specifically because I'm creating high quality content.
the choice of, creating high quality content is just because personally I like to experiment. Okay. But it's not that, someone who is not creating high, like, who doesn't have an extensive production. That doesn't mean that, it's finally art, right? You can put a good phone camera and, if the artist is performing well and the choreography is good, you don't need a high quality production. So I don't think that it's just because, I create high quality videos that I don't get trolled. I don't think it's that. I think it's a combination of everything. People like the visuals, people like the choreography, people like the performance. People like, I think a lot of people like the effort of trying something different every time. And they can see that everyone involved in the team, from the camera person to the light person to me, we are trying to give our best output. So I guess because of that, people are kinder, people are nicer to us. But it's not only because of high quality production. That is something that, I personally, because I've been in the industry for so many years, I'm always like, what next? What next do I do so that people who are viewing my content don't get bored? Because Yeah. it's basically basically social media platform where you can express yourself, and it's easy for people to get bored watching the same kind of content again and again. So I feel that it's about being relevant. It's also about giving them something that they have not seen before. So sometimes a high quality production or a different light setup is just a different visual for someone to see, um, on their phone. So they are instantly engaged. But I don't think it's just necessary. I just think that it's your performance, your art, your choreography. That's the most important. Nice. Praful bhai, because of the trolls, do you think कि आपकी creativity कहीं ना कहीं restrict हो जाती है? Because when you say you need a creative, you are at a creative block, कि क्या होता है, बहुत सारा सोचने के बाद जैसे creative block आता है. But एक time के बाद में जब अगर say a lot of trolls hit you, right? That time your mind is focusing on the trolls, right? And कल content भी बनाना है ना? So do you think it limits your creativity somewhere? I think since I am not a full-time content creator, I am an accidental content creator who makes or creates content with podcast में से कुछ clippings हो जाती है. So I am not a full-time कि मेरे को सिर्फ content ही बनाना है. First, second, आपका undoing हो जाता है कि बहुत सारी चीज आपको नहीं करना होती है. So when this happen troll roast, so आपको एक आईना दिख जाता है. You get a mirror कि ये चीज तो करनी है, ये चीज को नहीं करनी है. तो वही बोलते हैं ना कि लाइफ में यू आर एट द सर्टेन लेवल वेयर आपको नहीं करना इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है करने से ज्यादा, क्या क्या नहीं करना है वो. एंड सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी और बेटर होती है जहाँ पे आप एक पेनोरमा व्यू रख के चीज करते हो. पहले व्हेन आई वाज यंग, आई एम स्टिल यंग, आई एम 26, व्हेन आई वाज 20, 21, 22, आई वाज डूइंग सो मेनी टॉक शो, कुछ भी बोल देता था, बड़ा हड़बड़ी में रहता था, या फिर यार क्या फर्क पड़ा है ये वो. पर अभी आफ्टर ट्रोलिंग एंड रोस्टिंग, आफ्टर बीइंग वेरी फेमस, यू नीड टू बी वेरी पेनोरमा व्यू का आपको देख के रखना पड़ेगा कि किसी को गलत ना लगे, या किसी का यू नो कुछ भावनाएं आहट ना हो जाए, या किसी को परेशानी ना हो जाए. तो क्रिएटिविटी तो थोड़ी मरती है, ये बात तो है, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन आ जाता है एक. पर ऐसा है कि जो लोगों को सुनना है वही आपको बोलना पड़ेगा. तो क्रिएटिविटी अगर आपको बैकलेश ना दे तो वो क्रिएटिविटी भी अच्छी है ना. इफ क्रिएटिविटी में आपका कुछ गलत हो रहा है तो उससे तो अच्छा है कि कम क्रिएटिविटी एंड बेटर वर्क इज इंपॉर्टेंट. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का जैसे बोला, और बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव जो आपके कोई कंटेंट पे, आपके किसी स्पीच पे आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को और निखारते हो, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू ग्रो बेटर, और आप एक बेहतर इंसान और एक बेहतर कंटेंट क्रिएटर बनते हो. ये मैंने नोटिस किया. चलो इससे ये बता, मैं क्या कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं? भाई बनना क्या है उसमें, अभी सब बन रहे हैं, आप भी बनो. बैक सीट पे, ठीक है. ए प्रफुल भाई, यू नो सोनल एंड मी आर बोथ मल्लूस. अच्छा, ये मुझे 1-1.5 साल बाद पता चला था. So you did not मलयाली. अरे मुझे बाद में पता चला ना. गुड यार. तब से Gautam, you should create Malayalam content. I would love to, but my Malayalam is so bad. मैं मलयालम बोलता हूँ, मतलब मेरी मॉम को समझ आता है, मॉम के अलावा आसपास लोगों को समझ नहीं आता.
ठीक है. तो जब लेकिन कोई मुझे बोले ना मैं समझ जाऊंगा, लेकिन मैं मलयालम इज थोड़ा थोड़ा यू नो Not good. करना पड़ता है मलयालम थोड़ा. बहुत मीठी लैंग्वेज है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है मलयालम. भाई केरला पीपल आर द बेस्ट. आप कहाँ से हो? एमपी एमपी. Nice. इंदौर. इंदौर. भाई मैं भोपाल था. I was studying in Bhopal, called Sagar Public School. But I think that is more from a first session perspective. I mean, how we started from introducing ourselves. Probably I was introducing you guys. Sorry. From that introduction to the troll space, to how it affects us, to how creators. I see a lot of people also trolling हमारे इस comment box पे. मुझे अभी भी दिख रहा है. उसको मैं ऐसे देख के ऐसे इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है. So I think that is to all the people. I think अपने टाइम से टाइम निकालो, कुछ और अच्छा करो. The time you take to write bullshit about content creators, not only about any like the people who are in this life. जो आप दूसरे को आप टाइम निकाल के आप बोलते हो कि यार आप ये बुरे आप ये, वो टाइम आप इफ यू ट्राई टू स्टडी, ट्राई टू लिसन टू अ पॉडकास्ट, कुछ और प्रोडक्टिव कर लो, है ना, खाना बना लो, है ना, चाय बना लो. लेकिन उस टाइम पे अगर आप वो कर सकते हो देन दैट इज बेटर. अदरवाइज आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, 5 साल बाद मिलते हैं, है ना. तो that is from my side. Thank you Praful bhai, thank you Sonal. It was my I will just tell you one छोटे छोटे चीजें before we end. Sonal, there's a lot of love from Raina Ahuja, Manish Verma, Sanvi, a lot of things for you. Praful bhai, you have a lot of love from Pushkar, Brahman, Shashank, Bhavye, Devendra. These, like, you know, they are very specific love towards you. So Thank today you. is social media day and they all love you. We have been constantly talking. So let's just say goodbye and I'll see you guys very soon. Thank you Sonal, thank you. ये काश एक पर्सनल फिजिकल पॉडकास्ट होता तो मैं वो जैसे कॉफी विद करण में से गिफ्ट देते ना, तो वैसे एक हैम्पर देता. But unfortunately I'm lucky. Just kidding. But thank you so much Praful bhai, thank you Sonal. Thank you. And let's For the see you soon. Thank Yes. And you. Sonal, बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज. बॉम्बे में हो क्या आप लोग? हाँ बॉम्बे में. Okay, nice. चलो, Good. see you guys. Nice meeting you, Sonal. Thank you bro. Okay. Bye. 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 Thank you. Bye.